Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Gharials, which is going to be a part of the 5-minute series. I've started this new series specifically for all the important species which are asked in the competitive examinations, and this is going to be a part of environment and biodiversity. Alright. So first of all about Gharials. So Gharials are fish-eating crocodiles that are native to the Indian subcontinent, and they're distinguished by their long thin snouts. Okay. So India में 3 species मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल घड़ियाल होता है जिसका आईसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. फिर मगर क्रोकोडाइल होता है विच इज वल्नरेबल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल विच इज लीस्ट कंसर्न. सो इन ऑल दिस three species, Gharial is going to be the most important because first of all the IUCN is critically endangered and the species which are included in the critically endangered list are very important for UPSC specifically, and also they might be asked in other competitive examinations. Alright. So all the three are listed in Appendix 1 of CITES and Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. And इसका एक exception भी है. Saltwater crocodile populations of Australia, Indonesia, Papua New Guinea are included in the Appendix 2 of CITES. ठीक है, तो इंडिया के जो saltwater crocodile हैं, that is included in the Appendix 1 of CITES. So the questions which are asked in the previous years also includes कि वो Appendix 1 में है, CITES में है, CMS में है, if it's the bird species, और IUCN में क्या उसका status है. तो all these things specifically play a very important role. All right. So next we are going to discuss about habitat. Okay, Gharials were once widely distributed in the large rivers that flow in the northern part of the Indian subcontinent. तो अगर इनकी बात हम करें तो specifically हमें northern subcontinent में ही ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है. They are included in the Indus, Ganga, Brahmaputra and Mahanadi, Brahmani, Baitani river systems of India, Bhutan, Bangladesh, Nepal and Pakistan. And they are thought to have been found in the Irrawaddy river of Myanmar also. ठीक है, Gharials is a very important and favorite topic of UPSC, so please pay attention to it. And today their major populations occur in 3 tributaries of the Ganga river, the Chambal river, the Girva rivers in India, and the Rapti Narayani river in Nepal. All right. So here I have attached one map also for the habitat of घड़ियाल्स and we'll go through the rivers जहाँ पे घड़ियाल्स मिलते हैं. ठीक है, तो करनाली रिवर, गिरवा रिवर, चंबल रिवर, घाघर रिवर, सोन रिवर, गैंजेस रिवर, महानदी रिवर, Brahmaputra river. Then in Nepal we have Narayani Rapti river also and Irrawaddy river. So mainly the northern Indian subcontinent you will find good habitats of घड़ियाल्स जहाँ पे आपको काफी मतलब मिल जाते हैं ये. And I've attached the map so that it becomes clear in your head also कि कौन से rivers हैं कहाँ पे मिलते हैं. There was this question also in UPSC previous year's paper which I've attached in the last that asked about the natural habitat of gharials. So if any question comes regarding any specific species, then habitat plays a very important role, and you need to keep that in mind कि specifically if you do it from the map then the picture becomes broader and clearer. So that's the reason I've attached one map also. You can go through the rivers wherever gharials are found. All right, let's move on. Next, threats are again very important, so let's go through the threats also. एक तो alteration of habitat. In the present age of gharial, the rivers have been dammed और have been diverted for various purposes. बहुत सारे डैम्स बन जाते हैं. ठीक है, तो उसमें कई बार फंस जाते हैं ये, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकी स्पीशीज कम होती जाती है. ठीक है, डिप्लीशन ऑफ प्रे ऑल्सो. बहुत सारी आजकल फिशिंग काफी ज्यादा होती है तो उसमें बहुत सारे जो प्रेज होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये जीते हैं, ठीक है, वो अगर कम हो जाते हैं तो अगेन डिप्लीशन ऑफ प्रे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन द चेंजिंग सीजन्स. ठीक है, एंड पोचिंग ऑफ कोर्स. ठीक है, क्योंकि इनकी जो एग्स वगैरह होते हैं और बॉडी पार्ट्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिसिनल यूजेस ऑल्सो. So thus these are the respective threats of gharials. Okay, now the conservation I've already told you before that IUCN में it's critically endangered appendix 1. ठीक है, so and CITES में appendix 1 and wildlife protection acts में schedule 1. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में आ सकता है कि यार वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में इज इट इंक्लूड इन दिस शेड्यूल 1 और नॉट, बिकॉज आफ्टर 2018 आई गेस देयर इज अ चेंज इन पैटर्न ऑफ यूपीएससी आल्सो, so they generally don't give very one word kind of an options. 2-3 sentences होते हैं तो उसमें आपको ठीक मार्क करना होता है. So you have to keep in mind the important aspects, which is the IUCN, CITES and Wildlife Protection Act, and they have been asked in the previous year's papers also. Okay, next, प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं? ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ कुकरेल, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर इन लखनऊ, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड घड़ियाल इको पार्क एमपी. ठीक है, सो दीज आर द 3 प्रोटेक्टेड एरियाज. नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सी यूपीएससी में कुछ स्पीशीज बहुत ही फेवरेट होती हैं उनकी, जैसे आपका
घड़ियाल्स हो गया, ठीक है, गैंजीज में जो भी चीज़ें मिलती हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गैंजीज, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रीवियस ईयर्स में जितने भी स्पीशीज आते हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं. सो जनरली यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स पेपर स्पेसिफिकली ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज पार्ट, ठीक है, तो वो दे माइट गेट रिपीटेड. सो देयर वाज दिस क्वेश्चन इन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर, if you want to see gharials in the natural habitat, which of the following is the best place to visit? All right, the options are Bhitakanika mangroves, B Chambal rivers, and C Pulicat lake, and D is Deepore Beel. So I've already told you before कि northern Indian subcontinent में ही ज़्यादा मिलते हैं. So हमने देखा था rivers भी कौन से थे. So the right answer is B, which is the Chambal rivers. ठीक है. So this is a 5-minute series of Gharial. The series end here, and in the end of every series I'm going to present a UPSC previous year paper with respect to the species which I've already explained before. All right, thank you so much guys. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.